क्या वो हमारे को किसी तरीके की एक क्रिटिकल इलनेस की तरफ भी ढकेल रहा है, पुश कर रहा है? Sleep deprivation is a silent epidemic in young adults in today's date. It's a big concern for clinicians like us. Pradhan Mantri Modi, like, it is said that, he sleeps only for 4 hours. And he is also fine. So how do such people cope up with, so less sleep? मैं 4 या 5 घंटे से ज्यादा नहीं सो पा रहा, या फिर मेरी नींद बहुत जल्दी खुल जाती है, या फिर मैं बहुत ज्यादा मुझे नींद आती है, मैं 8 9 10 घंटे सो के भी मुझे फ्रेश महसूस नहीं होता. सो हाउ मच टाइम यू आर टेकिंग टू फॉल asleep, what is the duration of the sleep that you're getting, and also the quality of sleep. Brain doesn't have an off and on का switch नहीं है कि अभी मैंने ऑफ कर दिया और नींद शुरू हो गई और अभी मैंने ऑन कर दिया और आंख खुल गई. जैसे वीकेंड आता है, जैसे फ्राइडे नाइट आती है, ये सैटरडे नाइट आती है, तो हम 2 भी बजाते हैं, हम 3 भी बजाते हैं, वी हैव अदर थिंग्स टू अटेंड टू. मेरी सुबह के 6 कैसे होंगे वो मेरी शाम की 6-7 बजे डिटरमिन करेगा. In this episode, we are going to talk about the importance of sleep, how sleep is important. Sleep is also as important as your food, as your work, or maybe anything else which you want to give more importance to. It is said that, when somebody stretches oneself, the first thing they compromise on is their sleep. It may be because of their work, their social commitment, or maybe anything else. We talked to Dr. Monika Sharma, who is a sleep expert, to find out the importance of sleep. And she told us that for the good morning, there should be a good night as well. So one needs to sleep at the fixed time and wake up also in the early morning at the same time. It helps you to energize your body. Needless to say that early to bed, early to rise makes a man healthy, wealthy, and wise. Also, she told us that fully rested body helps us to work at full potential. So join us in this episode to understand more about sleep and its importance. Welcome, Dr. Monika, on the show. Thank you for having me, Pawan. ओके, स्लीप डिसऑर्डर, क्योंकि जिसके ऊपर हमारा ये आज का टॉपिक है, बताइए दैट व्हाट इज स्लीप डिसऑर्डर, हाउ टू रियली डायग्नोज स्लीप डिसऑर्डर. Pawan, pehle to thank you very much for having me on the podcast and giving me this chance to speak about a very critical, very important topic, which is sleep amongst teens. And starting with sleep disorders किसको कहते हैं और हम कैसे understand करें. Sleep disorders, Pawan, we can also understand them as sleep-wake disorders. And for a very simplified understanding of your viewers, जब भी कोई इंडिविजुअल अपनी नींद के फॉर एग्जाम्पल टाइमिंग को लेके कोई प्रॉब्लम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे बहुत लेट नींद आ रही है, मुझे सोने में बहुत टाइम लग रहा है, टाइमिंग को लेके कि जो मेरी नींद का ड्यूरेशन है वो बहुत कम है, मैं 4 या 5 घंटे से ज्यादा नहीं सो पा रहा, या फिर मेरी नींद बहुत जल्दी खुल जाती है, या फिर मैं बहुत ज्यादा मुझे नींद आती है, मैं 8 9 10 घंटे सो के भी मुझे फ्रेश महसूस नहीं होता. सो हाउ मच टाइम यू आर टेकिंग टू फॉल asleep, what is the duration of the sleep that you're getting, and also the quality of sleep. Now, quality of sleep का मतलब ये है, how do you feel when you wake up in the morning? That is a big indicator of what is the quality of your sleep. When we are sleeping for say 7 to 8 hours और हम अच्छी नींद ले रहे हैं, then we should be getting up feeling totally refreshed and rejuvenated and recharged. So if an individual वो 6-7 7.5 घंटे की नींद लेने के बावजूद अगर सुबह उठ के फ्रेश नहीं महसूस करते, which means that there is something not going right with regards to their sleep. So अगर हम broadly understand करने की कोशिश करें sleep disorders को, तो वो जो है इस स्पेक्ट्रम पे फॉल करते हैं. Having said that, sleep disorders जो हैं 80 प्रकार के हैं. There are 80 different types of sleep disorders that we diagnose. And बहुत बार जो ये sleep disorders हैं, ये कोई और बीमारी के चलते भी हमको देखने को मिलते हैं, कोई और मेडिकल कंडीशन के चलते भी देखने को मिलते हैं, या कोई और मेंटल डिसऑर्डर या कॉग्निटिव डिसऑर्डर के चलते भी हमको देखने को मिलते हैं.
So this is how, I will simplify and explain what sleep disorders are. So they are basically sleep wake disorders that we see people who are experiencing, and because of these problems that they're experiencing, say in sleep onset or sleep maintenance में नींद उनकी बार बार टूटती है, there is a lot of broken sleep, और वो सुबह उठ के फ्रेश नहीं महसूस कर रहे, इन सब के चलते दिन के टाइम पे भी there is a lot of distress that they are experiencing. The distress can be physical distress. It can also be cognitive distress, which means कि दिन में बहुत tiredness, fatigued महसूस करते हैं. सिर दर्द की शिकायत जो है वो बहुत लोग हमको बताते हैं जिनको स्लीप प्रॉब्लम होती है. इसके अलावा मेमोरी लैप्स, फॉरगेटफुल होते हैं, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, चिड़चिड़ापन है, एग्रेशन है, और वो बहुत छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट करते हैं. सो दीज आर सम ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स दैट वी कॉमनली गेट टू सी इन पेशेंट्स हु हैव एन अंडरलाइंग स्लीप डिसऑर्डर. ओके, सो जब आप स्लीप डिसऑर्डर की बात करते हो, आप कहते हो कि 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा सो करके भी किसी को फ्रेश महसूस नहीं होता. वेन एवर दे वेक अप इन द मॉर्निंग दे आर फीलिंग कि कुछ प्रॉब्लम हो रही है, सर दर्द से लेकर के नींद, चिड़चिड़ापन होना एंड अदर सिम्टम्स. बट क्योंकि जब हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं, जब हम एथलीट्स की बात करते हैं, तो जहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है एंड दे हैव टू ऑफ कोर्स पुट इन देयर 100% एफर्ट्स इन ऑर्डर टू अचीव वट एवर दे वांट टू अचीव इन देयर लाइफ. सो कभी कभी उनको 4 घंटा या 5 घंटे की नींद ही मिल पाती है. सो बट अगेन लाइक इट इज देयर रूटीन कि 4 घंटा 5 घंटा सोएंगे एंड देन दे हैव टू जस्ट वेक अप अनदर डे एंड देन दे हैव टू स्टार्ट फ्रेश. उस केस के अंदर क्या ऐसा भी होता है कि आपको कोई स्लीप डिसऑर्डर नहीं है, बट बिकॉज यू आर स्लीपिंग लेस, मे बी यू आर स्लीप डिप्राइव्ड सो टू से, तो आपको कोई इट लीड्स टू मे बी अ स्लीप डिसऑर्डर और मे बी कुछ एक बड़ी और बीमारी की तरफ ये लेकर चला जाए. ऐसा कुछ होता है क्या? Absolutely, Pawan. देखिए, sleep deprivation is a silent epidemic in young adults in today's date. It's a big concern for clinicians like us. हो ये रहा है कि चाहकर भी जो टीनेजर्स हैं, एडोलेसेंट्स हैं, यंग एडल्ट्स हैं, वो अपनी स्लीप नीड पूरी नहीं कर पा रहे. And there are a variety of reasons why that is happening to them, right? About 80% of athletes are sleeping for 6 to 6.5 hours, and the recommended sleep need, or the recommendation that we have based on what National Sleep Foundation suggests, is about 8 to 10 hours for adolescents or teenagers. और 80% जो हमारा टीनेजर्स हैं वो 6 से 6.5 घंटे की ही नींद ले पा रहे हैं ऑन रेगुलर बेसिस, स्पेशली व्हेन दे हैव स्कूल नाइट्स और कॉलेज नाइट्स. So you see that there's a lot of sleep debt, there's a lot of sleep deprivation and sleeplessness that they're carrying with them at any given point of time. So they are impaired in many ways. कुछ चीजें जो मैंने आपको बताई in terms of physical distress, in terms of mental distress. So you can understand very well, Pawan, जब हम नींद नहीं पूरी हो पा रही है टीनेजर्स की, तो वो अपनी क्षमता से बहुत कम, below their potential they are working, they are nowhere close to their full potential. And the level at which they are functioning, be that athletes or non-athletes, they are functioning at a suboptimum level. Why? Because their basic biological need, that is sleep, is unfulfilled. They are not meeting their sleep needs on regular basis, night after night. और स्लीप डेप्रिवेशन का एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है, विच मीन्स कि अगर आज आप 2 घंटे कम सोए हैं, कल भी आप 2 घंटे कम सोए हैं, तो आप एक वीक में एक स्लीप डेट कैरी करते हैं अपने साथ. वो 6 घंटे का है, 8 घंटे का है. And commonly the pattern that we see in teenagers, when they come to see me in clinic, is that सुबह तो उनको 6, 6:30, 7 बजे के आसपास उठना ही पड़ता है against their will, because they have to go to school or whatever other commitments they have, college जाना है, school जाना है, training के लिए जाना है. सोना जो है वो 12, 1, 2 बजे से पहले नहीं हो पा रहा है. Sometimes they are genuinely making efforts to fall asleep earlier, but it's not happening. So there are variety of reasons, there are host of reasons which are responsible for teenagers not sleeping on the time that the society or parents expects them to sleep. अब parents आते हैं ये complaint लेके कि मेरे बच्चे को जो कि athlete है या student है उसको 10, 10:30 बजे सो जाना चाहिए. जब ये बच्चे सुनते भी हैं अपने पेरेंट्स की बात, दे कम एंड दे टेल मी कि मैम हमने जेन्युइनली कोशिश किया 10, 10:30, 11 बजे सोने के लिए, लेकिन हमको नींद नहीं आता. सो देयर इज बायोलॉजी एट प्ले हियर.
Yes, technology, social media, they are colliding with adolescence biology here. Social media, technology, screen time, ये सब भी contribute कर रहे हैं उनका late sleep onset के लिए. But one message that I want to give to parents and educators and as a society, what we need to understand is that there is something called adolescent biology, which is very different from adults. सो नेचुरली जो हमारे टीन एज पॉपुलेशन है उनका स्लीप ऑनसेट जो है वो 1.5 से 2 घंटा एडल्ट्स या यंगर चिल्ड्रन के कंपैरिजन में लेटर होता है. So even if they are trying to sleep, fall asleep earlier, but they are naturally unable to do that because there is a natural biological shift. And as you know, ये जो teenage का जो पीरियड होता है ये बहुत सेंसिटिव पीरियड होता है. बहुत सारे बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, बहुत सारे हार्मोन्स में चेंजेस जो हैं इस दौरान बच्चे एक्सपीरियंस करते हैं. उसमें स्लीप हार्मोन भी अपना रोल प्ले कर रहा है. और नेचुरली जो स्लीप हार्मोन है वो लेटर, मच लेटर 11 बजे के बाद में जो है वो ब्रेन प्रोड्यूस करने लगता है, जिसके चलते जो है वो लेट बेड टाइम होता है बच्चों का. और जैसे आपने पॉइंट आउट किया, नाइट आफ्टर नाइट जब ये रात को 1-2 बजे से पहले सो नहीं पा रहे हैं और सुबह 6:30-6 बजे उनको उठना ही है क्योंकि स्कूल पहुंचना है, तो आप देखिए इट्स सिंपल मैथ, दे आर स्लीपिंग फॉर मे बी 5 एट द मैक्स 6 आवर्स एवरी नाइट. और जब ये इतना कम स्लीप पे परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ब्रेन बहुत डिफरेंट तरीके से प्रोसेस करता है व्हेन इट इज नॉट वेल रेस्टेड, व्हेन इट इज नॉट वेल स्लेप्ट. ब्रेन एक्सपीरियंसेस डिफिकल्टीज इन प्रोसेसिंग द इंफॉर्मेशन जो कि टीचर क्लास में देती है या कोच फील्ड में दे रहे हैं ट्रेनिंग के टाइम पर. और जो है बहुत स्लोअर मेंटल फंक्शनिंग होती है बच्चे की जब उनकी नींद पूरी नहीं हो रही. जैसे कि मेंटल इम्पेयरमेंट देखने को मिलती है, वैसे ही फिजिकल इम्पेयरमेंट्स भी देखने को मिलती हैं इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. सो यूजुअली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड रिकवरी एंड रिजुविनेशन जो कि हम मसल्स में, बॉडी में रात को सोते हुए जो स्लीप का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, अगर हम एथलीट्स की बात करें या नॉन एथलीट्स की भी बात करें, जो फिजिकल रेस्टोरेशन ऑफ बॉडी दैट टेक्स प्लेस व्हाइल वी आर asleep, वो जो है वो आप एक अपॉर्चुनिटी अपने ब्रेन से स्नैच कर रहे हैं जब हमारी डे टू डे, नाइट टू नाइट स्लीप नीड जो है वो फुलफिल नहीं हो रही है. I was coming to the question only that जो बहुत सारे डायग्नोसिस जिनकी आपने बात करी, जी, क्योंकि हम जब फिजिकल इम्पेयरमेंट की बात कर रहे हैं ड्यू टू स्लीप डिप्रीवेशन, हम मेंटल इम्पेयरमेंट की बात कर रहे हैं. सो कैन दिस लीड टू एनी क्रिटिकल इलनेस एज वेल, स्लीप डिप्रीवेशन, या ठीक है मतलब ये यहीं तक ही रुक जाता है, ठीक है ओवर अ पीरियड ऑफ लाइक व्हाटएवर इयर्स हम लोग स्लीप डिप्राइव्ड हैं एंड देन ठीक है मतलब वो हमारी फिजिकल एक्टिविटी, ओवरऑल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ उसके ऊपर जी. इफेक्ट कर रहा है, बट क्या वो हमारे को किसी तरीके की एक क्रिटिकल इलनेस की तरफ भी ढकेल रहा है, पुश कर रहा है? सो आंसरिंग द सेकंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन पवन, कि जब हम स्लीप डेप्रिवेशन को एड्रेस नहीं करते टाइमली, सो वो एक एक्यूट से क्रॉनिक फॉर्म ले लेता है. अभी स्लीप डेप्रिवेशन हर रात हो रहा है और कुछ हफ्तों से हो रहा है, कुछ महीनों से हो रहा है, हो सकता है कुछ सालों से भी हो रहा हो. एंड देन इट टेक्स अ फॉर्म ऑफ अ फुल फ्लेजेड स्लीप डिसऑर्डर. और अब ये स्लीप डिसऑर्डर के साथ साथ देयर इज क्वाइट अ बिग पॉसिबिलिटी कि स्लीप डिसऑर्डर के साथ साथ ये एक मेंटल डिसऑर्डर भी बन गया है, ये एक कॉग्निटिव डिसऑर्डर भी बन गया है. और रिजल्टेंटली क्योंकि हार्मोन्स का फ्लक्चुएशन हो रहा है, जब ब्रेन अच्छे से प्रोसेस नहीं कर पा रहा है तो हार्मोन्स भी अच्छे से जो हैं वो फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं. सो एवरी सिंगल एस्पेक्ट ऑफ आवर फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग इज कॉम्प्रोमाइज्ड if we do not address this simple situation of sleep deprivation. It started as a simple situation of sleep deprivation कि चाहकर भी मैं 8-9 घंटे की नींद नहीं ले पा रहा था क्योंकि मेरा होमवर्क था, या as I mentioned that biology is at its play, या मेरा ध्यान जो है वो सोशल मीडिया की तरफ, स्क्रीन टाइम की तरफ ज्यादा हो रहा था. So whatever be the reason, जब स्लीप डेप्रिवेशन बढ़ती जा रही है तो सिर्फ स्लीप डिसऑर्डर्स को ही आप इनवाइट नहीं कर रहे, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे फिजिकल डिसऑर्डर्स, फॉर एग्जांपल ओबेसिटी, फॉर एग्जांपल डायबिटीज. सो this is again very commonly we are seeing in younger adults and teenagers also. Obesity is a big problem
right? And sleep deprivation is posing as the biggest threat for physical and mental disorders for teenage population. So yes, if it goes undiagnosed and untreated, then in the longer run सिर्फ स्लीप डिसऑर्डर जो है वो और बहुत सारे फिजिकल और मेंटल डिसऑर्डर्स का फॉर्म लेके हमारे सामने बाहर आते हैं. ओके सर, जब ये बहुत सारे फिजिकल या मेंटल डिसऑर्डर का रूप लेकर के हमारे सामने आते हैं, उस केस में ऑब्वियसली वो डॉक्टर वो स्लीप एक्सपर्ट के पास नहीं जाएगा. वो जाएगा मे बी अगर इफ ही इज ओबीस, ही इज डायबिटिक, तो वो डायबिटिक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास में जाएंगे, या डिपेंडिंग अपॉन जो भी डिसऑर्डर है उसके लिए वो डिफरेंट स्पेशलिस्ट से मिलेंगे. वो डेफिनेटली स्लीप एक्सपर्ट के पास में नहीं आएंगे. बट कब स्लीप एक्सपर्ट को कंसल्ट कर लेना चाहिए बिफोर इट इज टू लेट? ये पवन आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया. हमारे पास ज्यादातर जो पेशेंट्स आते हैं वो रेफरेंस से आते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ कार्डियोलॉजिस्ट विल रेफर मी अ पेशेंट जो कहेंगे कि देखो ये पेशेंट को ये हाइपरटेंशन का पेशेंट है, हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, रेगुलरली मेरे पास आ रहा है, दवाई ले रहा है लेकिन अनकंट्रोल्ड है. सिमिलरली डायबिटीज का पेशेंट है, रेगुलरली मेरे पास फॉलोअप के लिए आ रहा है, दवाई भी ले रहा है लेकिन कंट्रोल नहीं है डायबिटीज. सो आई ऑलवेज से that sleep is the missing part of the puzzle. हमारे चाहे वो हेल्थ का कोई भी आप फॉर्मूला उठाते हैं, चाहे वो वेट मैनेजमेंट है, चाहे वो हाइपरटेंशन है, चाहे वो डायबिटीज है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की भी अगर हम बात करें, इन माय ओन स्टडी व्हिच आई डिड अ डेकेड बैक, एंड इट इज we started a conversation around sleep management in heart health. And इसको बहुत सारे अवार्ड्स मिले, बहुत अप्रिशिएट किया था इस स्टडी को, एंड वी वर एबल टू एस्टैब्लिश दैट अगर स्लीप हम पूरी तरीका से एडिक्वेट स्लीप नहीं ले रहे हैं और अच्छी क्वालिटी की स्लीप नहीं ले रहे हैं, तो हम अपने हार्ट डिजीज के चांसेस जो हैं वो 3 से 4 गुना बढ़ा रहे हैं. सो आई वाज एबल टू एस्टैब्लिश दिस कोरिलेशन बिटवीन स्लीप एंड कार्डियक डिजीज a decade back through my research. सो बहुत बार ऐसा देखा गया है, क्योंकि स्लीप एडिक्वेट नहीं है या फिर कोई अंडरलाइंग स्लीप डिसऑर्डर है जिसको डायग्नोज नहीं किया गया और ट्रीट नहीं किया गया, उसके चलते बहुत सारी फिजिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो या तो हमारे सामने आके खड़ी होती हैं, दैट leads to manifestation or development of certain physical ailments, including cardiovascular disease, a lot many cognitive disorders, and also dementia and Alzheimer's. Studies have also shown correlation between sleep disorders and cancer. So every aspect of our, as I mentioned earlier, physical and mental health is directly or indirectly impacted by our sleep health. So बहुत लेट पेशेंट हमारे पास पहुंचता है. जब तक पेशेंट हमारे पास पहुंचता है तब तक वो एक्यूट से बहुत क्रॉनिक हो चुका होता है. बट एज वी से देर आए दुरुस्त है, इट्स नेवर टू लेट टू गेट ऑन द राइट पाथ. जब तक मेरे पास पेशेंट आते हैं तब तक वो ये सारी चीजों में जो है वो उलझे हुए होते हैं, और क्योंकि वो इतने डॉक्टर्स को मिल चुके होते हैं पर उनको कोई राइट सोल्यूशन नहीं मिल रहा होता, तो आप यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड दैट दे आर depressed also, they have given up hopes also. So ये इस स्टेट में generally patient जब तक मेरे पास पहुंचता, they have a thick file of medical records, हर टेस्ट हो चुका होता है, हर स्पेशलिस्ट को वो मिल चुके होते हैं, लेकिन उनको आराम नहीं मिल रहा होता. And essentially what we are doing is we are fixing their sleep, we are diagnosing and seeing that if there is some untreated, undiagnosed sleep disorder, and once we have the diagnosis with us, we start the treatment, and we see that when their sleep becomes better, a lot of other physical and emotional signs and symptoms and conditions that they have also become better. कोई एक सोल्यूशन तो डेफिनेटली हर किसी के लिए नहीं होगा, लाइक कि किसी को 6 आवर्स सोना चाहिए, किसी को 8 आवर्स सोना चाहिए, या किसी को 10 आवर्स सोना चाहिए. I mean, there are standards of course for kids, from kids to adults, but किसी की नींद बहुत कम होती है. कोई 4 और 5 आवर्स सोता है, जैसे प्रधानमंत्री मोदी, like it is said that he sleeps only for 4 hours, and he is also fine. So how do such people cope up with so less sleep? And there are other people as well. Answering your question, see, sleep needs या जो sleep requirement है वो एज के साथ वेरी करती है.
आप ये बात समझते हैं, इन्फेंट की स्लीप रिक्वायरमेंट अलग होती है, मैंने आपको बताया एडोलेसेंट की स्लीप रिक्वायरमेंट अलग होती है और एडल्ट की स्लीप रिक्वायरमेंट अलग होती है। और जो आपने बात की शॉर्ट स्लीपर्स की, बेस्ड ऑन साइंस आई कैन टेल यू दैट द स्टैटिस्टिक्स कम्स to zero. So there is a specific gene which makes you capable of working optimally, efficiently with say 5 hours of sleep. But statistically speaking, that amount of population, the percentage of the population is equivalent to zero. It's a very rare gene. Now, जब आपने कहा, a lot many people, I see so many high performers, and they claim कि हम 4 से 5 घंटे की नींद पे we function. But what we are talking about, Pawan, here is essentially working to our full potential. आप और मैं भी आज रात, anybody can take 4 to 5 hours of sleep, yet function. We will show up at work. How productive, efficient, what is the quality of decisions that we are taking, how creative we are when it comes to problem solving. It's some of the questions which only good sleep, fully restorative sleep, good quality of sleep can provide you with. As I mentioned, जब एक sleep deprived exhausted brain बहुत different तरीके से हमारा brain, there are different parts of the brain which are responsible for different functions, right? Emotional processing एक function में होती है, executive functioning जो है वो एक part of the brain में होती है, और sleep deprivation हर every part of the brain is impacted differently by sleep deprivation. In fact, we have studies which have shown that sleep deprivation, if you are keeping yourself awake for say 18 hours or 19 hours at a stretch, your brain is as good or bad as intoxicated brain. So if I look at PET scan of an alcoholic and I look at a PET scan of a person who is awake for say 18 hours or 20 hours, which is not completely unusual, right? There are working days जब हम लोग 4 घंटे 5 घंटे की नींद लेके भी अगले दिन we show at work, right? But essentially, we are working with a brain which is as bad as intoxicated brain, right? So you can very well imagine कि हमारा उस वक्त जो executive functioning है in terms of creativity and in terms of out of box thinking, in terms of performance and productivity, in terms of emotional regulation, right? So how I put it is all gas, no brake, because the brain doesn't know when to apply the brake. So it is all accelerator. And that's the reason, why when people are short on sleep, they end up taking, impulsive decisions. They get involved in a lot of risk-taking behaviors. And in order to cope with it, they are trying to manage it by fueling their systems with, say, caffeine, energy drinks, sugary snacks. And that again is leading to a lot of metabolic syndrome, obesity, weight gain. So you see how everything is connected to each other just when we are not meeting our sleep need on regular basis. बहुत सारे disasters हुए हैं, चाहे वो aviation industry में है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें ये बात बाद में सामने आई कि वो जो क्रैश था या वो जो एक्सीडेंट था वो इसलिए हुआ क्योंकि the person who was responsible for it was sleep deprived. So in terms of decision making, in terms of judgment, everything is compromised when brain is not well rested, when we are functioning on very little sleep. Okay, so इसके लिए कोई एक आम सा सोल्यूशन मैं ये बोलूंगा, बिकॉज बात इतनी ना बढ़ जाए या प्रॉब्लम इतनी ना आ गया चली जाए कि जहां पर हमें स्लीप एक्सपर्ट को मिलना पड़े, जहां पर हमें मे बी कोई और डिसऑर्डर हमारे अंदर आ गया जिसकी वजह से मे बी वी आर मीटिंग अदर स्पेशलिस्ट एज वेल. सो वहां पर ना पहुंचे उससे पहले हमें क्या करना चाहिए हमारे आम लोगों के लेवल के ऊपर, अपने घर में, अपने बच्चों के साथ में, या एज अ स्टूडेंट वो क्या कर सकते हैं? जी पवन, सबसे पहली बात तो ये है that we have to understand importance of sleep in our lives. Parents need to understand that kids need to sleep. As a society, we need to give sleep due attention, due importance, due regard that it deserves. Sleep is the first one जो हम sacrifice करते हैं जब हमारे पास काम आता है, वो चाहे बच्चे हैं चाहे वो बड़े हैं. we want to catch up with our friends,
right? We want to have some me time. We do that all by sacrificing our sleep. हम सबको मालूम है कि हमको decent hour पे unwind करके सो जाना चाहिए. पवन, हम सबको मालूम है that we should be sleeping for 7 to 8 hours. This is no rocket science anymore. इतना information आज की डेट में सबके पास है. It is all a matter of priority. We are sacrificing sleep for other activities. So the day we promise ourselves that I need to prioritize my sleep so that I can be a better version of myself tomorrow morning, so that I can give my best shot. I wake up with adequate level of energy. I wake up with the right positive mindset, and I can regulate my emotions, right? So if we want all of this, then the simplest, the most enjoyable way to do is to get a good night's sleep. So you just have to create and block those 7 to 8 hours of rest and recovery for yourself on regular basis. I know it's easier said than done. We should start unwinding, say, half an hour before our bedtime. So if we decide that the bedtime should be 10:30 or 11 starting tonight, start preparing for sleep. What we call is start setting the stage for sleep. Right? Unless we are so chronically sleep deprived कि आंख बंद करते ही brain को opportunity मिली और immediately you fall asleep, which by the way is a big indicator of a sleep problem. A lot of athletes, a lot of people will tell me with a lot of pride कि हम तो कहीं पे भी सो जाते हैं, आंख बंद करते ही हमें तो नींद आ जाती है. नींद is not a problem. And I am here to tell you that this is the biggest red flag. It is abnormal. Your brain processes. There is a stage, one stage after another stage after another stage, and that is when sleep happens. Brain doesn't have an off and on का switch नहीं है कि अभी मैंने ऑफ कर दिया और नींद शुरू हो गई और अभी मैंने ऑन कर दिया और आंख खुल गई. So the thing with sleep is that sleep cannot be forced. You cannot decide कि अच्छा मेरे पास अभी next meeting के लिए half an hour है और मैं सो जाता हूँ. Unless you're chronically sleep deprived, you can catch up on sleep. A well-rested person cannot force sleep. If I'm already meeting my sleep needs, there is no way that I can decide कि आज तो मैं 2 बजे सोऊंगी, आज तो मैं 4 बजे सोऊंगी. But if you are sleep deprived and your brain is already craving that give me some rest, give me some rest, I am working on survival mode. मेरी बैटरी रिजर्व पे लगी हुई है and you need to plug in. We are so conscious and aware कि अभी वो ग्रीन से ऑरेंज हो गया, ऑरेंज से रेड हो गया, हमारी फोन की बैटरी या डिवाइसेस की बैटरी आती है. It is time that we pay attention to our brain's battery and our body's battery also. And we start reading the cues and signs and signals of exhaustion, of fatigue, of tiredness, of sleepiness. So what is happening is that हम लोग दिन में कॉफी पी रहे हैं अपने आप को जगाए रखने के लिए, एंड रात को अल्कोहल यूज कर रहे हैं अपने आप को सुलाने के लिए. दिस इज द सोसाइटी. दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. And that's why I'm saying that this is a big threat. And imagine when these teenagers, 20 years down the line, when they will be adults, then when they will be occupying significant positions in the society, and they are our future leaders, and they are working at their suboptimum levels. At this point with sleep deprivation, they are inviting obesity, they are inviting diabetes, they are inviting cardiovascular disease, they are inviting a host of neurological, cognitive impairments and disorders. So this is how the future will look like if we do not understand the importance of sleep today and we start intervening so that we have a better generation. So the starting point really is prioritizing sleep. You have to block those 7 to 8 hours on regular basis for your rest and recovery because you deserve it. जब 24 घंटे हैं, बहुत सिंपल मैथ है पवन, 8 + 8 + 8, 8 घंटे हम वो काम करें अपना प्रोफेशनल, वो बच्चा है तो अपनी पढ़ाई करें, 8 घंटे रिजुविनेशन, रिक्रिएशन के लिए हमारी कुछ हॉबीज हैं, हमारे कुछ इंटरेस्ट्स हैं, हमारा सोसाइटी हम रहते हैं, हमारे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कम्युनिटी वर्क है, और बाकी के 8 घंटे जो है वो हम अपनी रेस्ट और रिकवरी के लिए रखें. ये हमने कॉम्प्लिकेट किया है. Right. So prioritize sleep. And another very effective tip that I can give to your viewers is regularity. Whatever sleep time you have and whatever wake up time you have, keep it regular. So बहुत सारा वेरिएशन नहीं होता. अगर हम टीनेजर्स की बात करें, क्या होता है कि रात को तो वीक डेज पे क्योंकि उन्होंने स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, ऑफिस जाना है, इवन एडल्ट्स की अगर हम बात करें,
come what may, they have to sleep by 12:30, 1:30, बिकॉज सुबह 6 बजे अलार्म बज जाएगा या 7 बजे अलार्म बज जाएगा। लेकिन जैसे ही वीकेंड आता है, जैसे फ्राइडे नाइट आती है या सैटरडे नाइट आती है, तो हम 2 भी बजाते हैं, हम 3 भी बजाते हैं, यू नो वी हैव अदर थिंग्स टू अटेंड टू। एंड बिकॉज सुबह ऑफिस नहीं जाना, सुबह स्कूल कॉलेज नहीं जाना, तो हम रात को 12-1 बजे तक सो रहे हैं। सो देयर इज अ लॉट ऑफ वेरिएशन। So lighting is also a very important cue for sleep onset. And also पवन, because जब इतनी वेरिएशन हमारे रेगुलर बेसिस पे हो रही है कि 4 दिन हम डिफरेंट टाइम पे उठ रहे हैं और सो रहे हैं, और बाकी के 3 दिन हम डिफरेंट, सो देयर आर नो सेट रिदम्स। सो वी ऑल हैव बायोलॉजिकल रिदम्स, राइट, सर्केडियन रिदम्स हम इनको बोलते हैं। जब मैं स्लीप ट्रेनिंग देती हूँ, चाहे वो एथलीट्स हैं, चाहे वो मेरे पेशेंट्स हैं, one of the main goals that I achieve with them is setting their circadian rhythms. एंड दोज एथलीट्स जिनके रिदम्स सेट होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो ऑनर करते हैं अपने बॉडी के क्यूज को, क्योंकि हमने उनको ट्रेन किया है टू लुक आउट दोज फॉर क्यूज एंड टू ऑनर देम, राइट। डू नॉट फोर्स wakefulness on you, so we are forcing wakefulness on ourselves. So definitely it's not one size that fits all, whether it is a common sleep deprivation problem or whether it is a full-fledged sleep disorder. The first line of action is assessment, diagnosis, and then appropriate treatment given what the sleep condition or disorder is. Okay. Thank you so much. Like, it was really lovely having you with us. बहुत कुछ जानने को मिला आज, एंड आई एम श्योर व्यूअर्स को भी बहुत कुछ जानने और सीखने को मिला होगा। एक चीज जो सबसे ज्यादा मुझे समझ में आई वो ये कि जितना इम्पोर्टेंट आपका काम है उतना ही इम्पोर्टेंट आपकी स्लीप है। सो जस्ट ऑनर दैट। Absolutely. That's the biggest message which I am carrying along. Ji. And Pawan, what I always tell my patients is that if you want to make a fantastic good morning, make a fantastic good evening. So a good day starts with a good night. We set the stage for a good day 8 to 9 hours before. मेरी सुबह के 6 कैसे होंगे वो मेरी शाम की 6-7 बजे डिटरमिन करेगा। So it's not just how I feel when I wake up in the morning. I actually set the stage for it at least 8 to 9 hours before. So I want to tell you viewers that if you are really looking forward to have a great day ahead, prioritize your night, get a good night's sleep, wake up feeling like a rock star, completely rejuvenated and recharged. Right. Thank you so very much, doctor. You're very welcome, Pawan. Thank you for having me.